है तो पहले वीडियो देखते हैं, इसके बाद बातें करेंगे. A lot of things have gone majorly wrong with the Indian youth, especially the Indian millennial generation. The first and foremost thing being Americanization. No, I'm not saying this out of patriotism. ये हर जगह I'm हो रहा saying है. this simply because it's highly stupid. Some of us millennials, despite being born and brought up in India, consider ourselves American by heart. We follow American news, American actors, American music religiously. We write long posts about who the president of America should be without having any experience of living in America and knowing their problems. We all love watching Hollywood movies, TV shows, Korean dramas, and other international films. And why shouldn't we? They're awesome. But the problems arise when some of the people who consume such stuff consider themselves superior than the ones who don't. First things first, you are able to watch these shows because you can afford to. You have a laptop or a mobile which probably your parents gave to you. You have a solid internet connection through which you torrent these movies. And if you're richer, you probably stream them on Netflix. A small town guy who cannot afford to watch these shows can be way more smart and gifted than you, and can be an amazing mathematician or an artist. So stop thinking about yourself as someone superior. Start calling yourself lucky. ये मेरे साथ हो चुका है. You like traveling, right? Hashtag wanderlust. So before traveling to Goa and putting up the trips pictures on Instagram, travel to at least one of the thousands of villages in India and you'll know how privileged you are. You'll know how the movies that you call dumb are sometimes the only source of entertainment and escape for the lower class, which forms a major chunk of the Indian population. And by the way, a lot of talk has been around about how India produces shit movies and how a Nolan cannot be born in India. When you sit there and complain about Indian cinema, ask yourself if you go and see movies like Tamasha, Swades, Newton, Rocket Singh, Trapped and Chakka Jasoos in their theatres. These movies were pure gems. Unfortunately, you did not watch them in the theatres and these movies did not earn enough. Hence, no producer put faith in such scripts again. Weird obsession with English and considering Hindi inferior. Oh, ये मैंने सुना है. So you can't read or write in Hindi and you think you're cool. Here's something for you. Your language learning capacity indicates how much your intelligence quotient really is. So basically, you're actually dumb if you cannot read or write in a language which is spoken around the place you have been living all your life. So the next time you say that you can't read or write Hindi, say that with a sense of guilt. Now some of you smartasses will say, why did I choose to put this video in English and not in Hindi? The judgmental and impulsive generation that we are, you'll call me a hypocrite in the comments. I'm speaking in English because I knew the moment you guys would know the video is in Hindi, you'd already assume that it's not worth your respect and time. And I really wanted people like you to be my target audience. And what is this weird thing of taking pride in correcting people's grammar? Do you speak in Shakespeare in English in your normal conversations? If you do, thou art a bit crazy. You see, language is a thing that keeps on changing and replenishing itself every decade. Language is a fluid thing. It isn't something rock solid. The perfect English that you speak or write today would definitely have been looked down upon in the Shakespearean era. Yes, you're true. Moreover, a plain crazy thing that has happened is that a few of us have started to speak in this weird wannabe American fake accent. See, there's nothing wrong in that as long as you need it. But no, people speaking this accent think they are a notch higher than the others. Dude, listen, you sound horrible. Why not speak in the English that you can speak? If you were born and brought up in India till 20 years of age, there's no way your accent is going to change overnight. So why not embrace the accent that you naturally have, rather than trying really hard to develop the weird accent that you pretend to have? Relationships. The idea of the proposal first came up in the West, and it was basically done for marriage. But no, it seems like a relationship in India is like a boat, where a 7th standard guy proposes a 6th standard girl and she comes into that relationship, which means one day you're not in the relationship and the other day you are in one. Guys, a relationship is the bonding between two people which gradually forms over a period of time. Think about your best friend. Was there this huge glorious day when you asked him, bro, do you want to be my best friend? No, right? It formed over a period of time. Similarly, relationships are formed over a period of time. There's no single day where you guys come into a relationship and fall out of a relationship. And speaking of relationships, almost everyone has now come to the conclusion that relationships suck. And there is a simple reason behind it. Suppose you're a guy who falls in love with a girl. The girl's boyfriend left her crying and she's not sure about relationships anymore, but is still interested in you. Due to her inhibitions and fears, she gives you mixed signals and decides not to let you in her life. You cry and you sulk.
you end up believing all relationships suck. Now when some innocent sweet girl approaches you, you Cycle treat her like shit goes because on. relationships suck. Now the girl sulks and damages someone else's life. It is a vicious cycle. Only if you would have broken the chain and accepted the next person in your life with an open heart and a clean slate, you could have known how beautiful and constructive a relationship can truly become. Guys, these are just a few of the many reasons why we as a generation are falling prey to depression, loneliness, and a number of mental illnesses. We have a knack of complicating things. Only if we keep things simple and think from different perspectives, life would be easier. Thanks a lot for watching the video. If you really liked it, please share it with as many people as you can. Subscribe to 4-Minute Films. Hey guys, ये थी वीडियो कैसी लगी आपको? मुझे बहुत पसंद आई. अमेजिंग कंटेंट था, सिंपलिसिटी से उन्होंने एक्सप्लेन की कुछ जो मेन प्रॉब्लम्स है. मुझे लगता है वो सिर्फ इंडिया की जनरेशन की नहीं, वो मिलेनियल जनरली आजकल हम रिलेट कर सकते हैं इन चीज़ों से. सबसे पहले मुझे जो लैंग्वेज वाला है, क्योंकि ये काफ़ी स्टिग्मा एक तरह का कह सकते हैं वो इंडिया और कोई भी जो देसी कंट्रीज है वहाँ पे ये जुड़ा हुआ है. देसी कंट्रीज में ज़्यादा इंडिया पाकिस्तान से है, क्योंकि जो दूसरे एशियन कंट्रीज है वो अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा एम्फसाइज करते हैं. वो हर चीज़ वहाँ पे दूसरे प्रॉब्लम्स है. टूरिस्ट को होता है कि इंग्लिश फ्रेंडली इतना नहीं है. एनीवे वो दूसरे उनका प्रॉब्लम है. लेकिन इंडिया में मैंने ये सुना हुआ है डेफिनेटली कि इंग्लिश जो है वो एक इसेंशियल तो है ही पार्ट उनकी लाइफ का, लेकिन वो जो सुपरिटी वाला एस्पेक्ट है वो डेफिनेटली वहाँ पे है. लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि जो हिंदी बोलने वाले वो इतने क्या कह सकते हैं, लाइक जैसे वो कह रहे थे कि वो वीडियो बंद कर देगी कि मैं आप लोगों के लाइक नहीं होता अगर मैं हिंदी में बात कर रहा होता. लाइक आई नो को एग्जैजरेट कर रहे थे, सरकास्टिक हो रहे थे. बट मुझे ये बताओ कि वाकई, क्योंकि मैं भी हिंदी में वीडियोस करती है, मुझे लगता था ये एक प्लस पॉइंट है मेरा कि मैं हिंदी में करती हूँ. आई मीन मैं ज़्यादा लोगों को वो रीच कर सकती हूँ और ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि कोई तुम्हारी लैंग्वेज बोल रहा है और तुम्हें ज़्यादा मज़ा आता है. लाइक मुझे आएगा और मुझे ज़्यादा चीज़ें समझ भी आएंगी. जैसे अब मैं एग्जांपल दूंगी, रिएक्शन चैनल्स जो फॉरेन रिएक्शन चैनल्स है वो अमेजिंग होते हैं. वो भी उनका भी दिल करता है देखने का कि वो कैसे रिएक्ट करते हैं. लेकिन वो 1 2 3 4 लाइक वो तुम डन हो जाती है. वो तुम क्या देखोगे, क्योंकि वो कभी भी तुम्हें 100% वो रिएक्शन 100% हर चीज़ पे नहीं दे सकते, क्योंकि वो उनकी चीज़ें नहीं है. वो छोटी छोटी चीज़ें जो सिर्फ हम समझ सकते हैं वो नहीं समझ सकते, लेकिन उनका कसूर नहीं है. तो ज़्यादा मज़ा आता है कि एक इंसान जो छोटे छोटे जोक्स है वो समझ ले. और यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहती हूँ, मैं 100% ये नहीं कह रही कि मैं 100% मुझे हर चीज़ समझ आ रही थी. आप लोगों को पता है मैं कितनी चीज़ें रिएक्ट करती हूँ और मुझे वो 100% समझ नहीं आती, बट गुड 90-80% मुझे आ जाती है. यहाँ पर मैं लाइक अपने आप को बिठा रही हूँ. मैं ये नहीं कह रही कि ओ मेरे बिल्कुल ऑथेंटिक 100% मुझे सब समझ आ जाता है, नो. लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हिंदी में उर्दू में ज़्यादा बात करूँ और उसको बेटर करूँ. आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं लिंग्विस्टिक्स और पॉलिटिक्स और लॉ ये मेरी स्टडीज़ का पार्ट्स हैं और उसमें मैं हिंदी पे भी वो स्टडी कर रही हूँ और हिंदी सीख रही हूँ. हिंदी सीखना मतलब लिखना गाइस, लाइक आई नो कि मैं बोल सकती हूँ बट लिखना वो आसान नहीं है. वो एक बिल्कुल ही एक और बहुत ही डिफरेंट लैंग्वेज और आसान नहीं है बिल्कुल भी हिंदी सीखना. और वो मैं करने की कोशिश कर रही हूँ. मुझे लगता है कि ये अच्छी चीज़ है. लाइक कल्चरली इनरिच होना इसी कहते हैं. लाइक इंग्लिश हर कोई बोल लेता है और हर कोई समझ लेता है आज के ज़माने में. जिसको नहीं भी आती उसको भी थोड़ी बहुत आती है और इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है. और वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि वो हॉरेबल साउंड करते हैं, वो स्टूपिड साउंड करते हैं जब वो बनाने की कोशिश, और मुझे लगता है नज़र आ जाता है. लेकिन इससे ये भी प्रॉब्लम हो गया है कि काफ़ी सारे लोग जो दूसरे हिस्से से हैं, जो पता है इंग्लिश नहीं में भी बोलते, विलेज से है और उनको वो भी जजमेंटल. ऐसा नहीं है कि वो जजमेंटल नहीं. लाइक अक्सर मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि ओह लाइक तुम, क्योंकि उनको नहीं पता चलता कि मैं इटली में हूँ, पता नहीं क्यों मेरे टाइटल में होता है, फिर भी उनको लगता है कि मैं पाकिस्तानी. और वो कहते हैं ओह पाकिस्तानी हो कि तुम पाकिस्तानी को क्यों शौक है इंग्लिश में बात करने का, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो कंफ्यूज्ड है और हर कोई इंग्लिश में क्यों बात करता है या इंग्लिश एक्सेंट में क्यों बात करता है, जो काफ़ी फनी है क्योंकि इंडिया में भी ऐसा है. लाइक ये कल्चर है, कह सकते हैं. लाइक सुपीरियर फील करना अगर तुम्हें एक जो लैंग्वेज है जो लाइक लिटरली इतनी रैंडम लैंग्वेज है और इतनी ईजियर लैंग्वेज है. लाइक मैंने लैंग्वेज पढ़ी हुई और इंग्लिश जो है वो अगर बहुत ज़्यादा डीप में ना जाओ, ऑनेस्टली कंपेरिजन टू अदर लैंग्वेज वो बहुत ही ईजियर है. लाइक वो मे बी इसकी रीज़न होगी कि हम बचपन से सुन रहे हैं, बट मैंने ढाई से लाइक हमारा ये बात होता रहता है. जो इंग्लिश है वो फिर भी एक अगर शुरू में तुमने सीखनी हो बहुत ही बेसिक टाइप की, ज़्यादा रूल्स नहीं इतने कॉम्प्लिकेटेड टाइप के. लाइक इमेजिन करो एक इंसान गोरा जिसे कहते हो, कोई फॉरेनर हो, वो हिंदी सीखे, उसके लिए वो मर जाएगा. लाइक वो आसान नहीं है. लेकिन एक सी फॉरेनर के लिए इंग्लिश सीखना
बहुत ही आसान होगा, आपको समझ आ गई है, आई एम श्योर। तो एनीवेज मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि लाइक क्या बनने की, लाइक तुम अमेरिकन साउंड कर रही हो, जो कि अमेरिकन मेरा बिल्कुल भी एक्सेंट नहीं है, बट एनीवे तुम अमेरिकन साउंड कर रही हो, तुम ब्रिटिश बोल रहे हो, तुम पाकिस्तानी हो, ब्ला ब्ला ब्ला, तुम पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो, यू साक, इस तरह के आते हैं। वो लोग भी होते हैं जो जिनको इंग्लिश नहीं आती है और वो नहीं बोलना चाहते या वो मुझे जज करते हैं। तो ये दोनों साइड से, ऐसा नहीं है कि मिलेनियल जो सिर्फ उससे ऑब्सेस्ड है वेस्टर्न स्टफ से, उन्हीं में प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली उनमें भी प्रॉब्लम है जो दूसरी साइड से है। और यहाँ पे मैं कहना चाहती हूँ ये डेफिनेटली ट्रू है। ये पॉइंट बहुत ही अमेजिंग था जो उन्होंने बोला कि ऑब्वियसली जब तुम ये सारी चीज़ें कर रहे हो, दैट मीन्स कि तुम एक प्रिविलेज सोसाइटी से हो, नो सोसाइटी नहीं, क्लास से हो। तो उस क्लास जिससे तुम्हारा ताल्लुक है, ऑब्वियसली फिर तुम थोड़ा सा ना जजमेंटल होना शुरू हो जाते हो कि ओह डूड, लाइक ये शर्लॉक वाली तो बात मेरे साथ हुई हुई है, लाइक लिटरली हुई हुई है कि मेरे सामने लोग थे, वो लाइक बात ऐसे कर रहे थे जैसे लाइक शर्लॉक का शो देखा या वो कितना अमेजिंग है, कितना, क्योंकि आप लोगों ने अगर देखा है शर्लॉक शोज तो आपको पता होगा किस टाइप का है वो, इसमें मिस्ट्री सॉल्व करना, और जैसे वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल दिखाया है, और ऑब्वियसली जैसे वो पोर्ट्रेट होना चाहिए था वो शो, वैसे ही हुआ है। और वो जो जो लीड एक्टर है वो मुझे वैसे बहुत पसंद है, वो अमेजिंग है। और वो लाइक वो दिखाने जो भी इस शो को देखता है वो अपने आप को इंटेलेक्चुअल फील करना शुरू हो जाता खुद ही, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई। ये ऐसे ही है जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का सभी सेम स्टोरी मुझे भी याद है, अभी तो इतना नहीं, बट 1-2 साल पहले तक कोई अगर नहीं देखता था गेम ऑफ थ्रोन्स, उसको जज किया जाता था, लिटरली जज किया जाता था, और ये डिबेट होती रहती थी। और मैंने पहले मुझे इतना नोटिस नहीं हुआ था, बट आहिस्ता से मैंने नोट करना शुरू किया था, ये लोग इसके थ्रू भी एक तरह की प्रिविलेज लेते हैं, एक तरह से उनको लगता है वो अप टू डेट है, जैसे कि ये बहुत अच्छी चीज़ है इन चीज़ों के पीछे रहना। मुझे लगता है अगर तुमने न्यूज़ नहीं पढ़ी एक दिन की, वो ज़्यादा शर्म वाली बात है, क्योंकि प्रो लाइक आज का ये ग्लोबल जो विलेज बन गया है ये वर्ल्ड, अगर तुम्हें न्यूज़ नहीं पता, जो मेन न्यूज़ होता है, ऑब्वियसली छोटी छोटी तो हम ब्लेम नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़ी बड़ी होती है और सीरियस टाइप की न्यूज़ है, अगर तुम्हें वो नहीं पता लेकिन तुम्हें ये पता है कि शर्लॉक की या गेम ऑफ थ्रोन्स की जो लास्ट सीजन था उसमें क्या हुआ, आई मीन इतने भी तुम स्मार्ट नहीं हो। ये सेकेंडरी चीज़ है, ये हमारे इंटरटेनमेंट के लिए, ये हमें नहीं बता सकते कि हम कितने स्मार्ट हैं। नो, वो एक इंसान है जो बहुत ही स्मार्ट है, जिसने ये सीरीज़ क्रिएट की है और वो सक्सेसफुल है, और हम उसकी अचीवमेंट देख रहे हैं, हम उसका जो क्रिएट किया हुआ आर्ट है उसको देख रहे हैं, और वो हमें इंटेलेक्चुअल नहीं बनाता, वो हमें बस एक कंज्यूमर बनाता है जो एक प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे हैं। और चीज़ जो लास्ट थी रिलेशनशिप पे, वो भी ऑब्वियसली हमें पता है, लेकिन छोटे छोटे निन्ने चुन्ने मुन्ने होते हैं, और वैसे बात कर रहे थे जैसे ओ रिलेशनशिप सक्स, या फिर ओ लड़के सारी बीप बीप होती है, लड़कियां बोल रही होती है लड़के बीप बीप होते हैं, जो मुझे बहुत ही फनी लगता है। आई मीन वो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और मुझे बहुत ही फ़नी लगता है लिटरली, क्योंकि ये मुझे लगता है थोड़ा एफ्टअप कर देगा आने वाली जो जनरेशन है उसको भी। तुम्हें समझ नहीं आएगा ट्रेडिशंस, रिलेशनशिप्स, फीलिंग्स, इमोशंस, किसी के लिए कंपैशन होना, किसी के लिए किसी की फीलिंग से कनेक्ट कर लेना। जनरली मैं सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप की नहीं बात करी, ये जनरली हमें एफ्टअप कर देगा। ये यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से इंडिया या पाकिस्तान जैसी सोसाइटी में वो हम जिससे बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की होते हैं, उसको हम जो प्रोडक्ट्स हैं वेस्टर्न की वो कंज्यूम करके हम कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटे किड्स हैं उनको समझ नहीं आती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं मुझे लगता है, क्योंकि जब तुम छोटे हो